स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक अप विद टॉपिक्स विच इज़ रेलेवेंट टू माई सेल्फ, बट चीज़ें इतनी आसान नहीं है यार। कंटेंट क्रिएशन दैट इज़ इट्स नॉट ईजी कि आप कैमरा उठाए शुरू हो गया। नाउ यू कैन फील हाउ मच स्ट्रगल थ्रू पीपल गोज इनटू क्रिएटिंग कंटेंट। और हम लोग ऐसे ऑनलाइन आके कुछ भी कमेंट करके येस्टरडे or a day before I come across a post on Instagram, and in that post actually a girl shared that post on her story, and it was shared like this way. In that post it was written that my ex used to lock me out in my own apartment, which I paid for it, because I was out 2 o'clock. I was out hanging out with my friends at 2 o'clock, so he locked me out. But my new boyfriend now used to pick me up at 2 o'clock, ask me how your mascara is, compliment my mascara, it was looking beautiful at night. The question which came into my mind was like, women just want this only, question mark, like बस इतना ही मांगती हैं क्या उन्हें? And this question has a deep meaning inside, और उसका आंसर मिला मेरे को। मैंने खुद से पूछा, समझा। What we men actually do now, we try to protect in the foreshadow of our fear. करते करते पेट्रोल पंप आ गया था, इंटरप्शन हो गई थी। तो एक्चुअली आई वाज saying कि what men usually do now, they reflect on their fear and try to control their woman, be it their girlfriend, be it their wife, be it their daughter, be it their sister. In the name of protection they try, and they usually do in the Indian community, लोग लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, अपने आप को कह के कि जो लड़कियां रात को बाहर निकलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, उनके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, उनके रहन सहन अच्छे नहीं होते हैं। बट डीप डाउन एज अ पर्सन आई नो दे आर नॉट जजिंग द पर्सन और रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज वुमेन. I know that fear because I belong to that same male society. Actually, they are fearing the comments which their surrounding people do. Comment on the other woman when they find those. In their head, they are trying to protect those women, their women, in the name of harassment. कि उनके साथ वो harassment ना हो, उनके साथ वो eve teasing ना हो, वो ग्रोपिंग ना हो, या फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं अपने आप को बोलते हो और अपनी औरतों को घर पे रहने पे मजबूर करते हैं. दिस इज़ द रीज़न फॉर द मैन इन देयर हेड दैट हमें पता है भाई कि हम दुनिया देखे, हम लोग जानते हैं कि और कैसे लोग बिहेव करते हैं औरतों के साथ रात में, इसलिए. बट इज़ इट रियली टाइम बाउंडेड? आई एम आस्किंग मैन, इज इट रियली टाइम बाउंडेड पीपल? क्या वो सुबह जॉगिंग करते वक्त नहीं होता? जब लड़कियां जॉगिंग करने जाती है तब नहीं होता? क्या वो ऑटो पकड़ के ऑफिस जाती हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाती हैं, कैब लेके ऑफिस जाती हैं, क्या स्टेशनरीज के आइटम लेने जाती हैं, वो तब नहीं होता? यू नो इट हैपन बिकॉज यू आर सीइंग इट. और ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई ना कोई आपका एक दोस्त ज़रूर करता है. इज़ इट नॉट रॉन्ग टू बाउंड दोज वुमेन rather than reflecting on those people who are doing it? I know your fear is right, I'm not defending that. है वो fear, but is it obligated to the other women? उन औरतों की ये जिम्मेवारी है या फिर तुम्हारी खुद? To this conclusion I have come. Actually यही चीज़ें होती है. अरे मेरा यही सवाल था अपने आप से कि यार इन लोगों बजे ही घूमना है क्या? इनके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? लाइक दे डज नॉट वांट टू बी बिलियनियर, दे डज नॉट वांट टू बी बिगेस्ट स्टार इन दिस वर्ल्ड. बादशाह नहीं बनना चाहती हैं वो? क्या वो कॉन्कर नहीं करना चाहती हैं? बट उनकी शुरुआत और उनका अंत ही खत्म हो जाता है ना 7 के 7-8 कहाँ से करेंगी ये?
कहाँ से करेंगी जब वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाती हैं अपने सीनियर ऑफिस, तब उन्हें बोला जाता है कि मैं पास कर देता हूँ बट यू हैव टू स्लीप विथ मी। कहाँ से करेंगी? व्हेन दे अचीव समथिंग, तो उन्हें जब बोला जाता है कि क्या फ़ायदा पढ़ के या फिर अचीव करके, तुम तो सुंदर हो, तुमको ज़रूरत क्या है करने की, तो कहाँ से? सो इफ़ यू रियली, आई बिलीव सम पीपल एंड स्पेशली आई फील माई सेल्फ ऑल्सो in that fear also I do want to protect, and for that protection what can I do? As a person I can empower those women around me. I can not try to control them, try to listen to them, because they also know what happened in night. They also know because they are facing more than हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग रोक नहीं पाते, लेकिन उनके साथ होता है। So they know. So if a woman wants to go out at a night, just ask. It's okay. You don't have to give permission. You just have to say, I'll be on a call if you want me. I'll be one call away. I believe in yourself. I believe in you. But if anything's wrong happen, just give me a call. I'll be there for you. And if you fear the voices which can come around you, stop your friends first. Stop your colleagues first. When a woman get appraisal, don't let them speak like this way ki you got this promotion because you look beautiful. Stop them. Ask them not to. Stop. You have to say stop men, not those women. Stop men who are being surrounded by you. Small changes can help. And I'm being selfish. I really want a daughter in my life as a point of time. I'm 26. Maybe in 1 or 2 years I will get married, and for my first child I want a daughter, and don't want to how I am being raised. I also want to raise my daughter also. So if I can bring a little change, I will do it. Stop your friend who comment when you are in a car and they saw a woman walking down. Roko unhe. Give a clear indication. If you're a man, stop doing this. If you have a sister, stop doing this, because your sister is also walking on that lane. And if you are doing it, someone else will be doing it. And if you want to, don't happen to her, don't stop her by making her at home. Stop yourself, stop your friends speaking like that way, commenting that way. Be a man, be the
So as I was saying कि हमें क्या करना चाहिए as a man who really wants to empower and empathize with women and give them that opportunity जो अपने प्रोटेक्शन करते हो प्रोटेक्शन देने की. इसका सिंपल सा आंसर है यार, be a safe place, not a cage. Listen to her, listen to her problems. Don't try to give the answer, don't dictate. Support her voice. If she wants to do something in her life, help her, not be the obstacle in her life. That's called partnership. Challenge other men. कोई भी दोस्त आपका रोकता है, कुछ भी गंदी बात बोलता है, कोई भी ऐसे कमेंट करता है in a workplace or anywhere, stop them. Their beauty is not the standard only that well. Compliment her beauty. Yes, compliment her beauty, but compliment her mind also. That because beyond her beauty there is her mind, there her struggle, there her life. Protect her dreams also, not just her body. I know you want to protect her body. You don't want her to be get those harassment. But what about her dreams? What if she wants to become a pilot? If she wants to become a businesswoman, what about that? Speak, yeah, speak. It's hard, but speak. Speak whenever someone talks too ill about women. This is my thought. There is a quote from my side. A woman's freedom is not. It's not about being allowed at night. It's about being trusted to her own life, her safety, and her story. Thanks for watching this video. चलिए हम लोग मिलते हैं next